मैं उस खुदा रम इज़्ज़त के नाम से शुरू करता था। On the very outset of today's address, to express my gratitude to all the guests and students present here, I would like to thank today's distinguished Chief Guest Faisal and equally distinguished faculty members from different universities, institutions, Modernage and my dear Modernage. It's a matter of great, rather immense pleasure for me to see all these knowledgeable people under one roof. It was really an uphill task for our different departments of Modernage to contact all these busy people, because you know that this is the high time for their intake. So they were busy with their scheduled things, but they opted to come to Modernage to facilitate the students, because they understand that the most difficult thing for our students is to understand the changing scenario in education. There are hundreds and hundreds of departments that you are not familiar with. The same is true for me. You know that when I was at those benches, I was sitting here, we had one medical college, one engineering college with 3 or 4 disciplines, one law college, and a few academies. But now each university has plethora of different opportunities and departments, that the fields which have emerged in recent past, we never heard about all those disciplines and those faculties. So it is very important for our students to peep into their future through the windows of these universities and institutions. They must know that what are the different scenarios which are emerging on international level, what are the possibilities that you can get into through these universities. मुझे जापान जाने का मौका मिला, वहाँ पर मैं एक फैमिली के बिजनेस में गया जहाँ पर वो लकड़ी से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते थे। आप यकीन जाने, ये जो डोई नहीं होती जिससे हम मसाला निकालते हैं, देखिए जैसे वो फैमिली ये वाली डोइयाँ बनाती थी लकड़ी से, और सारी दुनिया उन्हें उनके काम की वजह से और उनकी उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो जानती थी, और पूरी दुनिया में मशहूर थे, और उनके एक्सपोर्ट का ठीक ठाक एक बड़ा क्वांटम था जो वो अपने मुल्क में रेडी लेकर आ रहे थे। सिर्फ ये लकड़ी के चमचे निडल्स जो थे वो बनाने वाले, और वो एक छोटा सा काम बजाय दिखाई देता है, चमचा बनाना कौन सा इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है, लेकिन वो बड़े लोग थे ना, उन्होंने इस छोटे से काम को बड़ा कर दिया। और हमारे यहाँ एक इतना बड़ा काम होता है, लेकिन जब हम उसे एक छोटे तरीके से करना शुरू करते हैं, उसे जाने बगैर, उसकी अहमियत जाने बगैर, ये देखे बगैर कि इसके कल क्या असरात मुरतब होंगे मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे मुल्क के ऊपर, पूरी इंसानियत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, ये जाने बगैर जब हम अपने छोटेपन का इजहार करते हैं तो वो बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। आज ये जितने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज आई हैं, इनसे बहुत अच्छे तरीके से ये समझें कि यहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है अपॉर्चुनिटीज की आपके लिए, और ये वो दरवाज़ा है जिसके ज़रिए आपने अपने फ्यूचर में दाखिल होना है। तो साकिब जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुसव्विर और खत्तात थे। उन्होंने अल्लाह का नाम इतनी, उनके हाथ की उंगलियों से अल्लाह लिखा जाता था, अल्लाह इतनी दफ़ा उन्होंने लिखा कि उनका नाम, उनका जो हाथ है उसकी शेप अल्लाह के नाम जैसी बन गई थी। तो वो कहने लगे, किसी ने उनसे पूछा नहीं कि आप तो
خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، اور اب جو ہے وہ آپ خطاطی سے پیچھے نہیں ہٹتے، سارا وقت آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ اپنی خطاطی کے نظر کر دی ہے، اور اللہ کے اسماء جو اسماء الحسنہ ہے وہ لکھتے ہیں. اور تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو میں یہ جو شاعر ہے نا غالب، میں غالب کے دروازے سے اللہ کے شہر میں داخل ہوں. تو آج آپ کے سامنے یہ دروازے ہیں جس کے پیچھے پورے شہر ہیں علم کے. اب آپ نے ان میں داخل ہونا ہے، ان کے بارے میں خوب معلومات حاصل کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جتنے سوالات ہیں ان کی تشفی ہو اور آپ کے ذہن میں نئے سوالات بھی بنیں. میں اتنے اچھے اپرچونٹی جو ماڈرنائٹس کے لیے مہیا کی گئی ہے، اس کے لیے میں تمام یونیورسٹیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. And all the ones who participated to make it happen, because bringing all these knowledgeable people under one roof was not something very easy. اور کمانڈر پاکستان نیوی جناب فیصل خان جتن صاحب کا ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف بھی لائے اور آپ نے اتنی مؤثر گفتگو کی ان نوجوانوں کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ آج کا دن ہماری زندگیوں میں، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں ایک نئی شروعات کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت قائم رکھے.